like I said, what do we look at? I mean, as human beings, हमारी जो emotional factor है, हम कैसे देखते हैं, we always look at best returns क्या है. So think of what you look at also. आप जब सोचते हो कि कहाँ पे डालना है, okay, best returns कौन सी फंड, आप वहां पे दें, और कौन से प्रोडक्ट और कौन से फंड्स में डालना चाहिए. But that is not the right way to do it. The way to think about your retirement plan है कि आपका गोल क्या है. गोल मतलब आपको कब रिटायर करना है, आपको कितने पैसे चाहिए जब आप रिटायर करोगे, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप. उसके बाद यू डिसाइड कि भाई ओके दैट इज माय गोल. अभी एसेट एलोकेशन, रिमेंबर वो आप बैलेंस थाली, वो कहां पे, चावल में कितना डालना चाहिए, सब्जी कितनी लेनी चाहिए, राइट? यू नीड टू डिसाइड दैट. वंस यू डिसाइडेड दैट, देन यू डिसाइड, ठीक है चावल इतना लेना चाहिए, लेकिन मुझे बासमती चाहिए कि दूसरा चाहिए, वो कौन सा चाहिए, राइट? That is where you decide your product. But the best thing you can do, who will help you right through this whole journey, right? This whole thing, setting up your goals, deciding, helping you with asset allocation, then deciding your product, आपको advisor चाहिए. So for example, all your NJ advisors, this is their role. This is why they can help you. This is how they can help you, is to plan that out for you. कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, and how do you do it. So you must always talk to an advisor because it helps balance it out, right? So you see this, I don't know how many of you can recognize ये क्या है, north, south, east, west, एक compass है, लेकिन यहाँ पे missing है ना कुछ. What is missing? The dial, right? That points you towards north कहाँ पे है, south कहाँ पे है. तो अगर आपके पास एडवाइजर नहीं हो तो आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा, राइट? यू विल डू इट एंड सम विल बी सक्सेसफुल, बट यू इंक्रीज आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस ऑफ अचीविंग योर रिटायरमेंट गोल is enhanced when you talk to an advisor and use an advisor. So let's talk about the 5 key takeaways. Start early, right? When you're 25, you have little amount to invest, you invest it, because every 5 years you wait, वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है वो डबल होती है, राइट? यू डिवर्सिफाई योर एसेट्स, राइट? बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट दैट थाली, दैट वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच. यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली. SIP करो because that means your emotional factor is taken away, right? And then you have to stay invested. Do not get scared के अंदर okay मार्केट ऊपर जा रही है तो अभी अंदर जाना चाहिए, मार्केट नीचे जा रही है तो पैसे निकालो. It does not work that way. You have to stay invested in it. In fact, उल्टा करना चाहिए आपको. मार्केट ऊपर जा रही है तो कम पैसे डालो, मार्केट नीचे जा रही है तो और पैसे डालो, because that will then help you take advantage of the power of compound. So we've got a bunch of our fund performances, but broadly speaking, my main message is in these things, right? So if I was to say, मतलब ये 5 जो takeaways है, अगर 5 ज़्यादा है, तो I'll give you just 3. Start early, invest regularly, and stay invested.